हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग कुशल मंगल से हैं और यू हैव बीन डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो आई एम बैक विद न्यू वीडियो ऑन अफ्रीकन रीइंट्रोडक्शन अफ्रीकन चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। ये टॉपिक केवल आज का नहीं बट ये पुराना भी हो चुका है कि नाउ दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन ओल्ड बिकॉज for last 1 year, right, African cheetahs have already arrived to India and there have been news continuously coming in media. अभी हाल ही के दिनों में भी समाचार पत्रों में ये आया हुआ है कि कुछ अफ्रीकन चीता जिनको कुनो नेशनल पार्क में लाया गया उनकी डेथ हुई है। तो इस पर भी कई सवाल उठाए गए हैं कि क्या यह प्रोजेक्ट जो भारत में अफ्रीकी चीता को लाना और उसको फिर वहाँ अडाप्ट करना, उसको करना, क्या ये सही फैसला है। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, ये एक इन्वायरमेंटल क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन कहीं आ जाए एग्जाम में और आपको उसको एनालाइज करना हो, हर तरह से उसे देखना हो, तो आपको उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए। ये सभी चीज़ें अखबार में है, न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स में है एंड यू हैव बीन ऑल रीडिंग दैट। इज नॉट समथिंग न्यू बट आई विल ट्राई इन दिस पर्टिकुलर सेशन to give you certain more inputs and facts from my own side, which may benefit you in terms of either you are appearing in competitive exam or in terms of general awareness. तो मैं आज का सेशन भी बाइलिंगुअल रखूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बात में करूंगा और सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। तो अफ्रीकन चीता की अगर बात करें यहाँ पर, तो अफ्रीकन चीता के तौर पर जो रीइंट्रोडक्शन है कुनो नेशनल पार्क में, लेकिन उसका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, है ना, अगर हम पास्ट को देखें हम, तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दो फोटोग्राफ्स मैंने दिया है। पहले के टाइम में, आज से 70-75 वर्ष पहले अगर हम बात करें भारत में, तो चीता, है ना, भारतीय चीता, इंडियन चीता विच यूज्ड टू बी फाउंड इन सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पर कई बार चीता को डोमेस्टिकेट भी किया जाता था, है ना। राजा महाराजा जो होते थे चीता को यूज़ करते थे जब भी वो हंटिंग या शिकार पार्टियाँ में निकला करते थे, या चीता को रखा जाता था। और हम पहले जाएं और हम पास्ट में जाएं तो मुगल के टाइम में, है ना, मुगल एम्परर्स दे यूज्ड टू कीप चीतास एज पेट एनिमल्स। सो देखा जाए कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडिया हैज बीन हैविंग द इंडियन चीतास एंड दे हैव बीन केप्ट देयर। इफ यू कंपेयर लेपर्ड, टाइगर्स, दे आर ऑल्सो कार्निवोर्स। विद रेस्पेक्ट टू चीता live around human surroundings, just like leopards sometimes live in the forest near to human areas. But if you look at conflict, man and cheetah conflict in the past have been very less. और चीता को जिस तरह से मैंने कहा कि उसको डोमेस्टिकेट भी किया जाता था, है ना, चीता के तौर पे वहाँ भी हो जाती, ये चीज़ था। अगर मैं थोड़ा और आपको मैप के थ्रू बताऊँ, इफ यू लुक एट द ब्रिटिश टाइम्स, है ना, ब्रिटिश टाइम चीता रेंज विच यूज टू बी फाउंड, this is what you can see in the Indian map here. I'll give you certain more input into this. Now look at here, Punjab, 1867 to 1900. That time cheetah, Indian cheetah. Then you can find Jaipur, 1860. Lucknow, 1837. Disa, 1830. Sindh, 1867. Rewa, Dohad, Chhindwara, that's part of Madhya Pradesh. Damangaon, Mirzapur, Sarguja, Korea, Devghar in Jharkhand, Hyderabad. So many this part, Chittoor, right, Mysore, this is all what you find, right. There used to be the range of cheetah, Indian cheetah, which used to be found that time, British time, right. If you look at this map, the entire this range what you see here, not only central part of India, but again you can see the part of Pakistan, the part of the northwestern part, like here Rajasthan, Gujarat part also there, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, right, Telangana, Andhra Pradesh, even the southern part, Deccan Plateau. This is where the range of habitat of cheetah used to be there. But because of habitat loss, hunting, right, cheetah number declined, Indian cheetah declined, and finally Indian cheetah became extinct, right. तो यहाँ पर जो है इंडियन चीता के कॉन्टेक्स्ट में कि धीरे धीरे जो है ये खत्म हो गया,
तो अगर देखें फर्स्ट चीता जो था, अगर हम और देखें 17th सेंचुरी में, इट वॉज केप्ट अंडर कैप्टिविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, मुगल एम्पर जहांगीर, दैट यूज्ड टू कीप. Then coming to 1799 to 1968, at least 230 cheetahs, right, existed in India according to research. And then 20th century, cheetah began to be imported for sport, है ना, जैसे कि हंटिंग या बाकी स्पोर्ट्स के लिए चीता को फिर इंपोर्ट करना स्टार्ट किया गया. 1947 द लास्ट 3 चीताज लिविंग इन द कंट्री, है ना, जो लास्ट 3 चीता बचे हुए थे भारत में 47 के बाद, आज़ादी के बाद जो है, उसमें मारा गया, उसको मार दिया गया महाराजा रमनौज प्रताप सिंह देव. महाराजा रमनौज प्रताप सिंह देव, द ओनली रिमेनिंग 3 cheetahs, Indian cheetahs, were hunted down by this Maharaja. That was a ruler of the erstwhile Korea state, in which there is known as the छत्तीसगढ़. आज जो छत्तीसगढ़ का भाग है, पहले कोरिया नाम उसका था, और वहां पर ये जो बचे हुए 3 चीता जो था आज़ादी के बाद जो है उनको मार दिया गया. That is a part of it. What you can see the photograph also there. This is what you have in this case. So if you look at cheetah ka, agar we want to see that part of the, if you let's say all these cheetah, they have come from one single stock, that is a African cheetah, part of savanna grassland, and the part of those kind of a climatic region where cheetah is adapted to live, Namibia, then a part of South Africa and all this. So African cheetah, that is, you can say, is a parental stock, the main stock. From this cheetah, one group which diverted to form the Asiatic cheetah. The Asian countries. Presently we have a remnant population of Asiatic cheetah, that is in Iran. अभी ईरान में जो चीता बचे हुए एशियाटिक चीता यहाँ पर है. इसी एशियाटिक चीता से फ्रॉम हियर ओवर द टाइम माइग्रेशन दिस इंडियन चीता इमर्ज्ड. भारतीय चीता जो है वो एशियाटिक चीता से आता है, राइट. तो अब इसमें क्या है कि ये जो इंडियन चीता है, दिस व्हाट हैज कम हियर, राइट, फ्रॉम एशियाटिक चीता. Now this got extinct. Now this is extinct. अब ये विलुप्त हो चुका है. ईरान में जो बच्चे कुचे एशियाटिक चीता है, मैक्सिमम जो बाकी जो है वो अफ्रीकन चीता आपको मिलेगा, राइट. दैट्स व्हाट इज पार्ट ऑफ इट. सो इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ range here, again I am looking at the map here. If you see this map here, this is basically the main reasons are this one. इंडियन चीता का या एशियाटिक चीता के नंबर कम होने का उसका मुख्य रीजन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंटेड दिस एक्शन प्लान ऑन द रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्रोजेक्ट दैट आई हैव टेकन हियर. नाउ इफ यू लुक एट वेरी क्लियरली हियर, आई विल जस्ट हाईलाइट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग. द मेन रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ चीता इन इंडिया, वन इज दिस वन, दिस sports hunting, habitat conversion like land use change, and then decline in prey base. यानी कि भोजन की कमी, जो उनको शिकार चाहिए जो है उसमें कमी हुआ, हैबिटेट लॉस हुआ है जहां पर जो लैंड यूज को चेंज होने की वजह से, और साथ साथ में जब हंटिंग की वजह से चीता के जो नंबर है वो डिक्लाइन हुए और बाद में अंत में खत्म हो गया. दिस इज व्हाट यू फाइंड हियर. लास्ट चीता इन द वाइल्ड वेयर 1948, जो मैंने 3 चीताज वेयर देयर, दे शॉट इन द साल फॉरेस्ट. जगह का नाम भी है कि कोरिया, उस समय डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ राज्य का, जहां पे 3 चीता को साल 1 में उसको मार दिया गया, जो महाराजा के जो है वहां पर जो, ठीक है. तो ये एक कहानी. तो अभी हम इसको देखें. दिस व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि इसका डिक्लाइन का जो रीजन है, दैट इज in terms of decline in this population of cheetah, population of Indian cheetah, and finally leading to the extinction. तो पहला तो ये है कि that is the hunting. Hunting is one. Second is the
habitat loss of habitat, उसका deforestation और conversion of land use है. Here conversion of land for agriculture or some other kind of human activities, that is where the part. And the third is the depletion, loss of prey base. Being one of the fastest animal, right, they're good in hunting, but again, if the prey population is not enough, is not able to support them, then that will really lead to the loss of the cheetah, the death will be there, right? So that's what this becomes very, very important to know that. Now we have introduced African cheetah to India, right? Again, we want to repopulate Indian forest and the grassland, those area with African cheetah. But now the questions still arise. What about this habitat loss? भारत में हमने चीता, अफ्रीकी चीता को तो ला दिया है, हम उसको रिसेटल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कारण जो पहले भारतीय चीता जो होते थे उसका अंत होने का जो कारण रहा है, ये तीन प्रमुख कारण है, क्या हम अफ्रीकी चीता लाने के बाद भी क्या ये कारण खत्म हो गया? दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. आई मीन टू से, even though we bring African cheetahs from Namibia, South Africa to India, still this cause, right, still this kind of reasons may also be cause of decline in number of African cheetahs in the present context. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी तरह का संरक्षण कार्यक्रम, किसी भी वन्य जीव का हम कंजर्वेशन प्रोग्राम करते हैं, अगर हम रीइंट्रोडक्शन भी करते हैं, क्या उस पे जो संकट या खतरा है, क्या हम उस पर काम कर रहे हैं? आर वी वर्किंग ऑन दोज रीजंस फॉर विच द लॉस और एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज आर देयर, वेदर यू टॉक अबाउट द पास्ट और प्रेजेंट. So that we need to ponder over it, that we need to see into it, right? Now further, if you look at here, as I said, 1948 the last 3 cheetahs were lost, and that was because of killing of these 3 cheetahs by Maharaja of that Korea district of Chhattisgarh. That is now certain facts about cheetah. Cheetah, fastest running land animal, right? Cheetah can adapt into kind of arid and semi-arid kind of environment, and they are basically hard type of species, right? Being carnivore, they depend on the herbivorous population for the food as a predator, right? So if you look at here, from where the word cheetah has come, cheetah word has come from Sanskrit word that is called here the चित्रका. ये जो नाम है, so the name cheetah, right, it has come from, derived from Sanskrit word. Chitraka, that means spotted. You will find that the skin of cheetah is spotted there, right? Now, if you look at presently, it is as per IUCN Red Data book. If you look at Red Data book, as per IUCN Red Data book, it is now vulnerable. African cheetah, Indian cheetah is extinct, but if you look at African cheetah, they're still there, but there is again threat. Vulnerable means that a category of IUCN where 50%, 50, half of the population has declined over the last 10 years or their 3 generations. So vulnerable, it comes under the vulnerable category. That means still threats are there. Then it also requires kind of tropical grassland with it depends on abundant prey base, right, herbivores. Like in savanna grassland of Africa, like Kenya and all this, there are a lot of herbivores are there, deers or zebra, giraffe and all this are there. They depend on that.
being a predator, as a carnivore animal, it depends on that. Then is the fastest running animal. It can run to a speed of like Rajdhani average speed I am talking about 135 km per hour and all this. That could be the part of this, right? So I welcome all of you. I can see all your comment there. Thank you, Nabin. Nabin is there. Nabin, thank you. I'm looking at your comment, right? Thank you, Nabin, for all your praise. Okay, good morning, good evening, good afternoon. There, Banmali Pramanik is there. So I am also very happy that you have joined this live session. So this is a live session and I am able to see all your chat, right? So being a fastest animal, they can run very, very fast, right? The speed is very, very fast. And they depend on those kind of climatic conditions. But with tropical climate like high temperature and all, they can survive there, right? अब जैसे इस बार के यूपीएससी पेपर में प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर नहीं आ सकता, right? If the question has not come in this year 2023 prelims exam, it might be asked in the next year 2024 exam. So any topic in current affairs is always evergreen. It's again up to the UPSC when UPSC asks questions, right? So good to see you guys here. So I'll continue with my discussion. So here, being a fastest run here, so they have been rapidly extension of goes 113 km per hour speed, right? The News 18 channel has reported 113 km per hour. That is speed, the average speed by which cheetah can run and hunt. That is part comes here, right? Fastest land animal and it can go up to that speed. Now coming to Cheetah Reintroduction Project. So you know that Pradhan Mantri Narendra Modi ji, PM Narendra Modi, right, introduced the first batch of African cheetah coming from Namibia, right? 8 of them arrived on 17 September 2022. पूरा pomp show, मतलब काफी लाइमलाइट, पब्लिसिटी, बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग के साथ नमीबियन चीता को भारत में कुनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया, राइट? So you know that these are the 8 photographs what you see. Out of that 5 females and 3 males. They arrived from Namibia, right? Then the second batch of African cheetah came from South Africa, right? Now again Namibian cheetahs there, and then the second batch came there. Now look at here. फीमेल चीता जो भारत में लाया गया नामीबिया से, उसमें 2 से 5 वर्ष के थे और जो मेल लाया गया जो चीता 3 है वो 4.5 से 5.5 साल के उम्र का था. तो एज ऑल्सो आई एम सेइंग हाउ मच इज द एज ऑल्सो. एंड देन कुनो नेशनल पार्क वाज इंट्रोड्यूस्ड. नाउ इफ यू लुक एट द कुनो नेशनल पार्क, इफ आई गो टू दैट हैबिटेट, व्हाई दैट प्लेस, व्हाई कुनो नेशनल पार्क? बिकॉज दैट इज वेरी मच सुटेबल हैबिटेट फॉर सर्वाइवल ऑफ African cheetah. You can visit Kuno from झांसी. आप झांसी से कुनो की तरफ जा सकते हैं, है ना? कुनो नेशनल पार्क आप विजिट कर सकते हैं. तो वहां पर जो है दिस 1952 के बाद जो 70 साल के बाद उसको लाया गया, 740 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको फेज मैनर में किया गया. एंड द गवर्नमेंट प्लान दैट फ्रॉम 740 स्क्वायर किलोमीटर स्लोली द गवर्नमेंट विल एक्सपैंड इन द रेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड देन ऑल्सो टू एडजॉइनिंग राजस्थान, है ना? ये प्लान है. अभी जैसे कि कुनो नेशनल पार्क के बाद गवर्नमेंट हैज प्लान फॉर गांधी सागर डैम, गांधी सागर एरिया ऑफ एमपी, दैट इज गोइंग टू बी हैव अनदर रिजर्व फॉर अफ्रीकन चीता. बाद में चल के 5000 स्क्वायर किलोमीटर का ऐसा रेंज जो है चीता के लिए होगा. अभी बस छोटा 740 स्क्वायर किलोमीटर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया. दूसरा यहाँ पर है कि इसको 9 पार्ट जो है किया गया. 8 चीता जो है एंड दे हैव बीन ब्रॉट 90 करोड़ उसका बजट है, 90 करोड़ का बजट में यहाँ दिया गया है. और धीरे धीरे जो है इसका जो प्लान है कि गवर्नमेंट वांट टू ब्रिंग 35 चीतास देयर. ये फेज वाइज जो है दिस रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, so there are batches are there. These batches of African cheetah,
what I've just discussed right now, that initially from Namibia, then South Africa. Now slowly this will be republished. So the total plan is that 35 cheetahs, male and female, to be introduced. Budget here, if you look at, is of 90 crore budget has been given, right? And third thing is that initially it has been given 740 square kilometer, the habitat, and that the government has introduced in the Kuno National Park in MP. But later on it will be expanded. This range will be expanded to 5,000 square kilometer. And this will comprise the area of MP, then also adjoining Rajasthan, right, where this population government will try to increase. It has all come in the PIB and everywhere. These all things has been come there. I'll share the screen there so that you are able to see that. So government has decided to expand slowly in batch wise, one by one. It will be expanding to that kind of a range there, right? And now if you see here further, as I said that 90 crore is a budget which has been given, right? चीता को 2 से 3 किलोग्राम मीट हर 2 से 3 दिन के दौरान दिया जा रहा है इसको. अब इसमें सबसे पहले क्या है, इसको क्वारंटाइन रखा गया. They were kept in quarantine and then it has been now then allowed to go to the wild there, right? So that is the one part which you need to remember that. Now what is very important here, that introduction project what has been done here, right? A very funny a cartoon which I found, that I would like to just show you this cartoon there. So what you see in this photograph is Dr. Rohan Chakravarti, right? He has a blog, Green Humor for Planet Earth, Green Humor. You can see in his hand there is a book also there, Green Humor, right? I have this book also with me, and I know him very well. He is a friend of mine. I have met him so many times. Now Dr. Rohan Chakravarti, he is India's famous wildlife cartoonist. Even his cartoon appears in the Hindu paper, right? Now he drew a very interesting cartoon here. What you can see in here, see here. You will find this cartoon in his blog also, Dr. Rohan Chakravarti's Green Humor, if you visit there. So when this project and the introduction of Namibian cheetah that was in the news, so this thing you can see here, if you see this plane, if you recall the plane which kept all 8 cheetahs quarantined and brought to India, it was also painted with cheetah photograph, right? So you can have the same photograph there on the front part. It was painted like a cheetah. Now you can see here, Gir Forest, Kuno National Park, right? A few years back there was a proposal to relocate Asiatic lion from Gir Forest to Kuno National Park. आप सबको पता है कि ये भी एक प्रोजेक्ट था जहां पर अफ्रीकी एशियाटिक लायन को, है ना, 2 तरह के लायंस पूरे वर्ल्ड भर में, अफ्रीकी लायन और एशियाटिक लायन है, एंड इंडिया इज द ओनली होम ऑफ एशियाटिक लायन, और गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. तो वहां से लायन का पॉपुलेशन बढ़ने के कारण देयर वाज अ प्रपोजल टू रिलोकेट एशियाटिक लायन फ्रॉम गिर फॉरेस्ट टू कुनो नेशनल पार्क. ठीक है, तो दैट डिडंट हैपन बिकॉज द गुजरात गवर्नमेंट डिडंट अलाउ फॉर दैट रिलोकेशन पार्ट ऑफ इट. So there was some kind of whatever the issues were there. So this relocation of Asiatic lion to Kuno didn't work. Now this cartoon very clearly talks about here. You see here Gir Forest, यहाँ Gir Forest का है, ये दोनों लायन यहाँ बैठे हुए हैं. वो जो प्लेन है जिससे नमीबिया से अफ्रीकन चीता को लाया गया, अब ये दोनों जो एशियाई लायन है ऊपर देखते हुए बातचीत कर रहे हैं. What is saying that? Wow, what's that airline called? इस एयरलाइन का नाम क्या है? तो दूसरा जो लाइन है वो बोलता है MP एयरलाइन, राइट? MP एयरलाइन. तो the first guy says MP मध्य प्रदेश. Then the second replies that no, misplaced priorities.
So basically, this cartoon is trying to make fun that whether this priority of the government to really introduce cheetah, African cheetahs to India, is it the right priority, right? So it's a kind of satire on the government. So I thought, like, let me discuss. I'll show you this particular photograph, right? You would like to see that, but again we see that what next part has to be there. Now again, second batch, Kuno National Park, second batch cheetahs were introduced here, right? What you find here. Now Kuno National Park, 742 square kilometer. That's the total range where it has been powered there, and 5 square kilometer separate soft release enclosure were made there, right? अब ये जो पार्क है, इसको जब शुरुआत में जब अफ्रीकन चीता को क्वारंटीन किया गया, उसके बाद उसको रिलीज किया गया, तो उसके 5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, एक सेफ एरिया एलोकेट किया गया फॉर कीपिंग दिस अफ्रीकन चीता फॉर सम टाइम एंड देन लेट देम अडॉप्ट टू द इन्वायरमेंट. Kuno National Park, 748 square kilometer, like in Madhya Pradesh, is also home of other animals like sloth bear, काला भालू, sloth bear वहाँ पाया जाता है. Then you have spotted deer, जैसे चीतल हिरन जो है वहाँ पाया जाता है. फिर यहाँ पे सिवेट है, जंगली बिल्ली वगैरह, सिवेट काइट्स है, वुल्फ है, भेड़िया वगैरह पाया जाता है, लोमड़ी वहाँ पाया जाता है, मंगूज, नेवला पाया जाता है, लंगूर पाए जाते हैं, और वहाँ पर परकोपाइन जो चिटीखोर वगैरह वो सब पाया जाता है. दैट मीन दिस area, Kuno National Park, is rich in biodiversity, and these are the species which are found, right? Other thing is that the abundance of चीतल, वहाँ पर काफी संख्या में चीतल हिरन पाए जाते हैं जो चीता के लिए फूड, चीता can kill them as a predator, can eat as a food, so that is available. So that is one another very important benefit of bringing here, and the park has 21 cheetahs based on that, and now the government want to expand to more than 35 cheetahs there, right? Now let's look at here. I want to bring here what exactly the plan is there. See here, the plan is this one. This is what we want to basically go in near future. ये near future में plan है. So what I'll do, I'll discuss the part of it. You will be able to see this image here. Let's look at here. The initial plan is that if you look at this part, Kuno National Park is here, right? Kuno, you'll find this part is Kuno National Park. ठीक है, ये मध्य प्रदेश का भाग है कुनो नेशनल पार्क. एमपी पे लुक एट, ये पूरा एमपी का पार्ट है. लेट मी जस्ट रीड्रॉ द पार्ट ऑफ इट. ये दिस वेयर यू कैन सी दिस इज द व्हाट आई एम जस्ट ड्रॉइंग द आउटर बाउंड्री हियर. दिस मध्य प्रदेश, कुनो एंड हियर यूपी, द झांसी. झांसी से आप जा सकते हैं, झांसी इज द पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. फ्रॉम देयर यू कैन गो टू दिस कुनो नेशनल पार्क हियर. अब यहां पर एक और जगह है नौरा देही, अनदर प्लेस. वन इज द कुनो नेशनल पार्क, अनदर रेंज विल बी नौरा देही. मैं लिख देता हूं कहीं साइड में. एक है कुनो वेयर द अफ्रीकन चीता हैज बीन ब्रॉट. सेकेंड प्लेस इज द नौरा देही. ये बाद में चल के यहां पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. दैट अगेन द पार्ट ऑफ एमपी. देन यू कैन सी हियर अनदर पार्ट ऑफ इज दिस वन आल्सो देयर, डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान. दिस पार्ट इज राजस्थान. हियर यू कम टू राजस्थान. नाउ यू नो चंबल, द पार्ट ऑफ चंबल देयर. चंबल का जो रीजन है, चंबल इज अ पार्ट ऑफ यूपी, एमपी एंड राजस्थान. तो चंबल का जो रेंज में यहाँ पर गांधी सागर डैम है ना, रिजर्वायर है जो कोटा के पास में. अब जाएंगे वहां पे एक जगह है जो मुकुंदरा हिल्स कहा जाता है. इट इज कॉल्ड मुकुंदरा हिल्स. सो इट इज दिस एरिया फ्रॉम नियर बाय एरिया मुकुंदरा हिल्स इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व. मुकुंदरा पर्वत जो है वर्तमान में भारत का बाघ का रिजर्व भी है. तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा, जो एडजॉइनिंग राजस्थान का एरिया है वहां पर उनको एक्सटेंड किया जाएगा. एंड एज मोर एंड मोर चीतास विल बी देयर, दैट विल बी एक्सटेंडेड टू दैट पर्टिकुलर जोन देयर. तो यहाँ पर ये चीज है. नाउ लेट्स सी फर्दर. ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, व्हाट आई वुड लाइक टू ब्रिंग हियर, इवन छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास, दैट अगेन द प्लान इज देयर, राइट? एंड लॉन्ग टर्म दे आर गोइंग टू ब्रिंग the population to all this area,
and Wildlife Institute of India have already prepared a kind of roadmap. Now what you see, this is a landscape. If you see this landscape here, open thorn forest habitat. यहाँ कुनो नेशनल पार्क का ये लैंडस्केप है. If you see this diagram, this is the kind of landscape, open landscape with grassland and the scrub forest. This was considered to be suitable habitat for African cheetah to survive. तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है. यहाँ पर अकेशिया का वहाँ पर है, और ये एक तरह का निश यहाँ पर जो है, जहाँ पर इसको स्टडी किया गया कि यहाँ पर कि अफ्रीकन चीता जो है वहाँ पर अपने आप को अडेप्ट कर सकता है. तो दैट इज हैबिटेट एंड सेंचुरी. दिस हैज बीन डन हियर. कुनो वाज कंसिडर्ड टू बी द राइट निश for this cheetah there, for with high probability of their survival, right? That was the thing here. So what I'll do here, what you see right now as a part of what I've mentioned here, it is now go into more information here. ये जो जगह जो है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आता है कि कोई भी स्पीसीज की जब हम बात करते हैं और खास तौर पे प्रेडेटर है, तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस लैंडस्केप में जितने एनिमल्स हैं फॉर सर्वाइवल, we look at survival of species. What is required is here, one is that the adaptation. To climatic conditions. जो वहाँ का climatic conditions है, उसके जो adaptations है, वो बहुत जरूरी होता है in habitat. हर स्पीसीज का अपना हैबिटेट होता है और उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां पर वो सरवाइव कर सकता है. तो पहला यहां पर आता है एडाप्टेशन, अनुकूलन टू दैट क्लाइमेटिक रीजन. कुनो नेशनल पार्क वाज कंसिडर्ड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, जहां पर अनदर थिंग कॉल्ड हियर वेजिटेशन. वन इज द क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, एंड सेकंड इज वेजिटेशन, which can help provide the environment in terms of sustaining the food web, ecological system, where vegetation is there, more number, and particularly they are predators, they eat herbivores. There has to be open grassland, scrub and scrub forest grassland. The vegetation, particularly for this type of scrub forest with grassland here. Now which become very suitable because that can sustain herbivores which are food for cheetah. That food chain, food web can be maintained there, right? One is that their genetic adaptation, their bodily, physically adaptation to that climatic region, the habitat. Third part which comes here, apart from this vegetation and adaptation, right? What is another very important thing which you know that which are connected to each other, geographically is connected to this concept, the niche concept. It's ecological niche in the habitat there. What is niche here? What is niche here is that is a set of conditions. The set of conditions required for survival. Now that is include here the food. Again, what comes here? Reproduction in the habitat. The resources are there. They are able to carry out the functions, like it is a predator animal, so functions etc. in its habitat. जो इसका habitat है, उस habitat में ऐसे सारे संसाधन या resources मिलने चाहिए जिससे वह species survive कर सकता है. Whether food, at the same time they can also multiply, reproduction. They can mate, reproduce, breed, give birth to the young ones, and the young ones are able to again survive based on that climatic conditions and the niche condition, that suitability of the habitat, and they are able to perform their functions, able to get food, multiply. So that another aspect plays very important role for in terms of adaptation and survival. So चीता को ये चीज देखते हुए अफ्रीकन चीता का उसका प्रॉपर एनालिसिस किया गया, एंड दैट लैंडस्केप कुनो नेशनल पार्क ऑफ एमपी वाज सेलेक्टेड टू बी द मोस्ट सुटेबल हैबिटेट
for survival and adaptation and increase in population of African cheetahs in India. तो उसके लिए यहाँ पर पूरा उसका रोड मैप बनाया गया, एक्शन प्लान बनाया गया और बैच वाइज उसको लाया गया, सेटल किया गया। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ऑलवेज जब आप करंट एस्पेक्ट पढ़ते हो तो यू हैव टू ऑलवेज कनेक्ट बैक टू द कॉन्सेप्ट्स, आपको कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करना होगा। लेकिन अभी क्या हुआ पिछले एक साल में, सितंबर में जब से इंट्रोड्यूस किया गया, 17 सितंबर के बाद से अगर हम देखें तो अभी तक बहुत कई ऐसे न्यूज आए कि जहां पर चीतास की डेथ हुई है, राइट, द डेथ ऑफ चीता हियर। सो इफ यू लुक एट हियर फर्दर, सो यू विल कम अक्रॉस दैट चीता डेथ एट कुनो, अभी आजकल ये काफी न्यूज में रहा है, राइट, डेथ ऑफ चीतास इन द न्यूज हियर। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट हियर, एडल्ट चीता कब्स डाइड, इसमें 3 जो है जो फीमेल चीता also gave birth to the young ones. They had given the birth to young ones and even the young ones were not able to survive. So we'll see the issues, क्या इसका issue क्या रहा है, but this is the news that Hindu paper and all have covered this news that the cheetahs, even the cubs which were born by female Jwala, the name of the African cheetah Jwala, the cubs even they were not able to survive. तो अगर हम डेथ की बात करें, Sasha died in March 27, right? Kidney problem was there was some kidney infection and Sasha died there. Then Uday died on 23rd April, again cardiopulmonary failure, यानी कि heart and the lung problem, उससे उदय का डेथ हो गया, उदय African cheetah died there in the month of April. Then you see that Daksh, third cheetah Daksh, May 9th died because injury from a violent interaction. There was some violent interaction among themselves, maybe there, and something there also. Again, the death was there. Then 3 cubs born to Jwala, the female cheetah, May 23rd. Weaknesses, extreme weather. वो बच्चे जो थे, जो cubs which were born were not very strong, they were weak. At the same time, very high temperature. These cubs had also died. ये जैसे न्यूज में आने के बाद है ना, इस पे भी अब हंगामा होना चालू हो गया। अब इसमें से यहाँ पर जो है, जैसे ये चीज है, कांग्रेस टारगेट्स सेंटर ऑन चीता डेथ। You know, Mr. Jairam Ramesh, he was earlier environment minister during the time of Congress government. He raised the question. Even National Green Tribunal, NGT, matter was brought before the bench of NGT to look into this kind of deaths of cheetah. चीता के डेथ पे एनजीटी पे भी मामला वहां पर गया है, ठीक है। तो वहां पे एनजीटी के बेंच ने कहा कि ये जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है चीता के मौत पे, ये पूरा पॉलिटिकल है। That was where the NGT's order was there. Then you can see here this one. 8th death puts project Cheetah under scanner. 8वां चीता है अभी हाल में डाई किया है। और अगर अब ग्रीन ह्यूमर का देखा जाए, डॉक्टर रोहन चक्रवर्ती हैज ऑल्सो मेड अ कार्टून ऑन डेथ्स ऑफ अफ्रीकन चीता। So what is the cartoon here? See that numbering just 7,000 cheetahs are now vulnerable in the IUCN red list. पर वर्ल्ड वाइड अगर चीतास को देखा जाए, अफ्रीकन चीता 7,000. Habitat loss has confined to 10% of the former range. Loss of habitat, 90% habitat has been lost. Poaching for use of our parts in Chinese medicine continue to threaten our population. आज के समय में भी चाइनीज मेडिसिन के लिए जो पोचिंग, चीता का पोचिंग होता है, अफ्रीकी चीता का पोचिंग होता है, तो उससे पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड. And to make it worse than ever before, the cubs, our cubs are now smuggled to the Gulf as pets. गल्फ कंट्रीज में, बाकी जगह पे जो उसके छोटे बच्चे होते हैं अफ्रीका से, जो चीता के होते हैं, उनको स्मगल किया जाता है, इलीगल स्मगलिंग होती है, एंड दे आर केप्ट एज अ पेट इन गल्फ कंट्रीज. दैट इज वेयर ट्रेडेड फ्यूल्ड सोशल मीडिया इलीगल ट्रेड होता है. एंड यू नो गैजल, आई कैन नेवर टेल इफ आई एम रेसिंग विथ यू और रेसिंग विद गैजल. अब क्या प्रे पॉपुलेशन कम हो गया तो उसके भी तौर पे वहां पर जो है तो चीता चाहिए. तो ये एक ग्रीन ह्यूमर कार्टून में ये दिस आर द फैक्टर्स हैज बीन सेड. अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि अभी जो 8 चीता का डेथ हो गया, इसके क्या क्या कारण है, और ये सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या ये चीता प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, विल इट रियली हेल्प. लेट्स लुक इनटू दिस. So what I'll do here, I'll just so here deaths of cheetah. This African cheetah. तो पहला इसका हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या
कॉज है जिससे डेथ हुआ है, उसे कारण क्या है यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर जो डेथ का कॉज ऑफ डेथ जो देखा गया, पहला है दे हैव बीन सफरिंग विद किडनी एलिमेंट। दूसरा है दिस कार्डियोपल्मोनरी, हार्ट एंड लंग्स रिलेटेड जो है, दिस प्रॉब्लम हैज बीन देयर। Then again it has been found here, another thing, the weakness and high temperature, heat। और आपको पता है इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी, this time it was extreme heat during the summer, right? So cubs were not able to survive there, right? Another thing has been said that these cheetahs were kept in quarantine, right? They're kept in quarantine for long time, and all these were young, they were all young African cheetahs were brought, since they were kept in quarantine for long time, and then when released, जब उसको रिलीज किया गया, and when released, that were not able to adapt फास्ट। अब आप ये समझो कि जो अफ्रीकी चीता लाया गया, यंग चीता थे, उनको क्वारंटीन में ज्यादा दिन रखा गया, फिर उनको छोड़ा गया। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन था क्वारंटीन के बाद, उनके पास उतनी ज्यादा अडेप्टेशन कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो जाके फिर बाद में अडेप्ट कर सके। तो ये भी एक रीजन रहा है कि क्वारंटीन जो है उसको लंबे समय तक रखा गया। तो फिर उसको रिलीज अप करने पे तो दे वर नॉट एबल टू अडेप्ट टू द एनवायरमेंट एंड देन दे डाइड। एक और यहां पर है, दैट इज अ I hope you are able to see here. Now hear my voice here. Now I am audible to everyone. Okay. So what I want to say here is that I think, let me see what time the sound issue was there. Thank you for the initiative here. Yes, thanks a lot. I would like to see that voice is not coming. I'll just see what time it has become there. Anyway, if you are not able to hear me, I'll again repeat the thing here. मैं फिर दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे कई अभी एलिगेशन, पॉलिटिकल एलिगेशन भी हुआ है कि चीता जो लाया गया ये प्रोजेक्ट सच में सही फैसला है गवर्नमेंट का। तो उसमें जयराम रमेश, द अर्ली रिवार्ड मिनिस्टर, ही हैज रेज्ड द क्वेश्चन, द मैटर वेंट टू द एनजीटी आल्सो देयर। ठीक है, 8 चीता का डेथ हो चुका है, और उसके जो मेन रीजन जो है ये इस प्रकार से है, जो भी रिपोर्टेड जो आया हुआ है। एक तो ये चीज है कि जहां पर किडनी प्रॉब्लम, किडनी फेलियर हुआ है, और कार्डियो और हार्ट प्रॉब्लम और लंग्स के प्रॉब्लम के साथ में डेथ हुआ है। जो बच्चे जन्म हुए, कब्स जन्म हुए, उसमें देखा गया कि वो बहुत कमजोर और वीक थे, और उसमें हाई टेम्परेचर, क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा रहा है जो समर में, तो वो हीट स्ट्रोक के कारण वहाँ डेथ हुआ है। क्वारंटाइन में इसको काफ़ी समय तक रखा गया, और बाद में जब उसको फॉरेस्ट में रिलीज किया गया तो दे वर नॉट एबल टू अडाप्ट वेरी फास्ट, एंड देयर ऑल्सो लेड टू द सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम देयर। एक और इसमें देखा गया कि पैरासाइट इन्फेक्शन है ना, पैरासाइट इन्फेक्शन देखा गया। तो पैरासाइट इन्फेक्शन क्या है कि जो रेडियो कॉलर लगाया जाता है गले में द एनिमल के, जो वहां पर मॉनिटरिंग के लिए, तो वो कहीं ना कहीं वो टाइट होगा, कहीं पर वो व्हेन द एनिमल्स मूव तो कहीं ना कहीं कट जाने के कारण, एंड देन द पार्ट ऑफ इन्फेक्शन हियर हैज आल्सो कॉज्ड डेथ ऑफ चीता। तो ये जो है कॉज है यहाँ पर जो मैंने अभी में लिखा है। तो so can anyone tell me from where you have missed out, so I can again repeat again, कहाँ से मिस आउट हुआ है, तो मैं I can again go back there। तो ये पार्ट यहाँ पर है। So this is what I have, this is डेथ जो है, ये मैं बताया, साशा, उदय, दक्ष, 3 cubs was born by Bernali for your chat from where you missed out. So here I am coming to solution part. What you can see right now,
solution part, continuous monitoring of the habitat. We need continuous, regularly the government and the forest department should, after release, should have each and every day report. And I think in Kuno National Park, forest department is doing that one. Medical, then this is most important one. Most important thing is this one, medical. ये जो medical treatment and rehabilitation and relief kind of urgent basis में होना ये बहुत जरूरी है. सबसे another very important thing comes this one. Next this one, the जो incubation है, the cubs, the cubs which are born, that require proper kind of a medical kind of incubation and support system so that they become strong. And then they also require nurture, the food and the nurture. The young cubs also require nurture. तभी जाके उसके population को बढ़ा पाएंगे ना, तो we will be able to increase the population there, right, of the part of it, right. So that will only be possible there. Okay, Shreya Rani has joined. Yes, Dinesh, thank you for your praise. Okay, Barnali, I think Barnali, now you can hear my voice, right? Okay, thank you, Barnali. Parasite infection, yes, I have repeated there. All right, there. So I am very, in between because battery was not working. That's what is required here. Now tell me, now just I am asking question. All of you are right now in the live class, live session there. Apart from this, what are more interference we require? What are all kind of solution we require to protect this animal there? We also require this one. Another thing apart from that, other reason which other solution what we require, so that is this one. अब जो यहाँ पर जो है एक प्रे बेस को increase in prey base so that they are able to there. Then second, avoid overcrowding. Let's say over the time when more number of cheetahs will be there, we must also take care there should not be overcrowding. हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा जैसे समय के साथ जब चीता का पॉपुलेशन बढ़ेगा, when the population of cheetah will increase, it should not happen that in a very small area we keep all these cheetahs and then that result into overcrowding. So that will lead to another kind of problem of competition for resources. That will be the part of it, right? Then third thing comes here, that is we need to ensure that proper abundant prey base is there, food is available to them, right? Another thing what you can think of a solution of this problem is that during the heat season, there is a heat wave season. इस बार गर्मी बहुत ज्यादा थी तो उसमें भी बहुत सारे डेथ हुआ. तो हीट वेव या उस समय के जो कंडीशंस होते हैं उस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इमीडिएटली द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मस्ट इमीडिएटली इंश्योर दैट such cheetahs are given shelter. Here in terms of shelter and rehabilitation during high temperature. जब high temperature है तो that time also we require to ensure that they get some kind of shelter and also rehabilitation part of it, relief time में. जब गर्मी ज्यादा है जहां उनको सर्वाइवल दिक्कत होगा तो हमें एक ऐसा चीता रिहेबिलिटेशन सेंटर को बनाना चाहिए. मैं what can be suggestion here? There have to be cheetah rehabilitation center made in the Kuno and that nearby area where we can bring them the cheetah back to that center and give them all the nurture, food, water and also medical relief. Right? That could be the part of it. Another part of it could be there. Right? और क्या क्या इसमें हो सकता है और क्या क्या आप सोल्यूशन आप कर सकते हो आप इसके अलावा जो है ओवरक्राउडिंग नहीं होना चाहिए, मोर फूड बेस होना चाहिए, उनके आपस के इंटर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. मिनिमाइज इंटर कॉन्फ्लिक्ट, मिनिमाइज द इंटर कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन वो नहीं होना चाहिए. तो कहने का मतलब ये है कि एक्शन प्लान के अंदर जो जो समस्याएं अभी चीता के संदर्भ में आ रहा है हमें उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें उसके लिए समाधान सोल्यूशन का बात होना चाहिए. गवर्नमेंट की बजटिंग बढ़ा देनी चाहिए. 90 करोड़ ठीक है पूरा प्रोजेक्ट में लग रहा है बट वी शुड ऑल्सो इंश्योर मोर काइंड ऑफ फूड, मोर टाइप ऑफ रिसोर्स,
मोर टाइप ऑफ फंडिंग, तो बजट को बढ़ाना जरूरी भी है वहां पर, तभी हम इंक्रीज कर पाएंगे और धीरे धीरे उसका रेंज को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, हर एनिमल का एक अपना टाइम होता है अडाप्ट करना कोई भी नई जगह पे और फिर मल्टीप्लाई करने का। तो यहां पर ये चीज है कि अब ये क्वेश्चन आता है कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज रियली गोइंग टू हेल्प, राइट। तो नाउ लेट्स लुक इनटू दैट कि वेदर दिस प्रोजेक्ट इज रियली गोइंग टू हेल्प देयर, है ना। ये चीज जो है वेदर, अब यहां दिस Cheetah Reintroduction Project is a right decision. अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपका विचार है, क्या यह प्रोजेक्ट कामयाब होगा, क्या ये प्रोजेक्ट रियली हेल्पफुल है, क्या ये सरकार का सही निर्णय रहा है? लेट मी सी योर कमेंट, यू कैन गिव योर कमेंट देयर. So I am saying that your comment there, that Banmali is there, then Barnali is there, all the student Ravi, that Dinesh, right, Naveen, all the students can give me the answer here. So what do you think that? What is your opinion there? Right, what is your opinion in terms of what do you think that whether this project is really a good decision from the government side to bring this kind of a African cheetah to India and resettle it, right? That is what I've given the session name also there. इस सेशन का मैंने नाम ही ऐसे दिया कि क्या ये सरकार का सही निर्णय है ऐसे चीता को लाना और उसको सेटल करना, वहाँ पर ये चीज़ है। तो मैं इसका कुछ पक्ष बताता हूँ। इसका जो मेन ये एस्पेक्ट है कि पहला ये चीज़ है कि दैट अगर हम प्रोजेक्ट का डिसीजन की बात करें कि सही है कि नहीं, तो दैट विल बी अगेन राइट, ये डिपेंड करता है मीडियम टर्म या मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एडाप्टेशन एंड सर्वाइवल ऑफ अफ्रीकन चीता। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या नियर बाय फ्यूचर में, नियर टर्म में या जो लॉन्ग टर्म में, क्या सच में अफ्रीकन चीता अपने आप को वहां क्रिएट कर पाएगा और अपना हैबिट, अपना निश बना पाएगा। दैट मीन वेदर द क्वेश्चन इज दैट हाउ फार, है ना, हाउ फार दीज चीताज are able to create their niches. जो मैंने बताया, niche is the kind of functions, based on the functions they are able to use the resources, all the conditions are able to multiply, breed, survive in the habitat. तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या ये चीता जो अफ्रीका से लाया गया, अफ्रीकन क्लाइमेट पे है, वो इंडियन के क्लाइमेट पे सेम चीज पे क्या अपने आप को निश क्रिएट कर पाएगा। वेदर दिस अनदर थिंग, इस पे डिपेंड करता है दैट ऑल इश्यूज एंड द प्रॉब्लम्स फेसिंग टुडे, फेसिंग एट प्रेजेंट आर रिजॉल्व। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट जो है, क्या ये सारे ऐसे जो समस्या आ रहा है, हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है चीता का, या जो उसके जितने भी इश्यूज हैं, अगर मान लो वो फंड की जरूरत है तो क्या सरकार उतनी फंड दे पाएगी आने वाले टाइम में, या जो जो उसकी समस्याएं हैं उसको लिए हम कितना प्रॉपर्ली कर पाएंगे, उस पर भी निर्भर करता है ना, ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर अब बनमाली का यहाँ पर आया हुआ है कि यस, बनमाली सेइंग दैट आई थिंक गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज गुड, राइट, बट द वे द मैनेजमेंट इज देयर, होल थिंग शुड improve more, right, very true. Banmali, you are very correct, whatever you are saying is very correct. It again depends on how properly we manage the thing there. ठीक है, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है, what we say is a landscape. One is a species conservation, another is a landscape conservation. That is here MP and Rajasthan, what the government want from Madhya Pradesh to Rajasthan, the adjoining area, Kuru National Park, Nora Dehi, then Mukudra Hills and all those areas, to that landscape conservation and management to ensure that entire ecosystem, here जो ecosystem
this management, that will be very, very important to help the survival of African cheetah. In order to help cheetahs to survive, we need to ensure that this is going to be there and उसको improve करना जरूरी है. Then I have said here कि ये decision right है. Yes, it is a right one. Wrong कहाँ हो रहा है कि हम उसको properly manage नहीं कर पा रहे हैं. We are not able to manage it. We are not able to implement properly. So that we need to again look into and try to resolve it, so that this issue which are right now there, that is taken care. That is all can be taken care. तो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. It's good that I am getting the answer from students here. That part is there. तो again it depends on कि कितना इसका जो adaptation जो climatic conditions है, how much fund. Again it depends on government further funding, further funds allocation. कि सरकार और कितने फंड जो है फर्दर फंड जो है एलोकेट करती है उस पर भी निर्भर करेगा वो. हाउ मच फर्दर द फंड्स गवर्नमेंट एलोकेट, it will again depends on that, because it's not that only bringing cheetahs and just leaving them in the wild. We need to again do the other part. Then again we require another thing is that a special task force for this project with the manpower पे, trained manpower, skilled manpower, more number of a human resource which is required to manage, उस पर डिपेंड करेगा. तो the decision is the right of the government that cheetah, bringing them cheetah and settle them. Same habitat का, same landscape का हम ऐसे lion को भी लाना चाहते हैं. Asiatic lions also we want to bring here. So, but again, what is very required? Asiatic lion or leopard or tiger and cheetah, each one to survive in the same landscape and the habitat in that same ecosystem, and they create their own niche over the due course of time. तो उसके लिए proper government have to give the proper support and proper monitoring, proper implementation, proper taking care of the medical emergencies, providing the resources in terms of where they are not able to get enough of the resource, and again depends on that. तब उस केस में African cheetah will be able to survive. Right, then only will be able to survive. Let me see if there is any more input from your side. Okay. So ये जो मैंने बताया अभी, so what I'm saying here is that ये निर्णय सरकार का सही है. The decision of the government is all right, but given the fact is that this decision could be really good when all the issues and problems with respect to this project which have come up right now with the deaths of cheetah are resolved. मेरा कहना है कि ये निर्णय अच्छा निर्णय है सरकार की तरफ से, और चीता, अफ्रीकन चीता अडॉप्ट करके अपना निश क्रिएट कर सकता है ओवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. लेकिन जो डेथ्स के जो रीजन है, जो मेडिकल रीजन है, हेल्थ रीजन है, या जो भी इसका क्लाइमेटिक कंडीशन या बाकी जो रीजंस हैं, उस पर प्रॉपर काम करना जरूरी है, सो दैट जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो वीकनेस है उसे हमें ठीक करना होगा. तो उस केस में क्या होगा, ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे न्यू बैचेस ऑफ चीता विल अराइव इन इंडिया, मोर पॉपुलेशन विल ऑल्सो मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस. एक बहुत अच्छी न्यूज ये है कि दे आर एबल टू ब्रीड इन क्यूनो नेशनल पार्क. दैट्स वेरी गुड न्यूज कि वो आपस में वो रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं और बच्चों का जन्म भी हो रहा है. अब जो बच्चे जन्म हो रहे हैं उनको सर्वाइव करना, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैज टू डू ऑल टाइप ऑफ मेजर्स कि कब्स डोंट डाई, जो कब से वो डेथ ना हो उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि ब्रीडिंग तो हो रही है, उनके बच्चे जन्म हो रहे हैं, अब बच्चों की डेथ ना हो.
उसके लिए जो प्रॉपर मेडिकल चाहिए, जितने भी इसके चाहिए, तो वो सर्वाइव करे उनको, जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग ग्रो ना हो जाए और फिर वो हैबिटेट में हो पाए। तो मतलब कहने का मतलब है कि अफ्रीकन चीता कैन ओवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, 5 years or 10 years, will be able to create its own niche, will be able to survive in that habitat and stay there. Only thing is that whatever the lacuna, whatever the problems, what are the issues that need to be resolved, जो मैंने बताया कि यहाँ पर ये चीज़ है, हमें ये ध्यान रखना होगा और हमें ये सारे जो चीज़ों को सॉल्व करना, फंड का एलोकेशन है, लैंडस्केप मैनेजमेंट चाहिए, हमें इकोसिस्टम मैनेजमेंट चाहिए, अलॉन्ग विद चीता एज अ स्पीसीज कंजर्वेशन चाहिए, दिस ऑल हैव टू बी देयर। तो उस केस में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है उसमें। तो ये जो भी न्यूज़ में अभी आजकल है कि डेथ ऑफ चीता को लेके जो है, ऐसा नहीं है, सरकार ने इसको संजीदगी से लिया होगा, क्योंकि मैटर वेंट टू द एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, Ministry of Environment, Forest and Climate Change would have definitely seen into that and asked the Kuru National Park authorities to look into the problem so that the survival aspect of African cheetah is more and deaths are prevented or minimized. ठीक है, तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा आने वाले समय में देखने के लिए कि कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट का आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो बीच में थोड़ा साउंड के काफ़ी प्रॉब्लम हुए क्योंकि बैटरी का बार बार मतलब बंद होना। थैंक you all are there, at least I know that there is some kind of battery issues, right? So that's what there. So I hope this is clear to everyone, whatever I have discussed here. So I'll stop the session here and we will meet in the next session with a new topic. Anything you want to ask? आप कुछ अगर पूछना चाहते थे, then I can reply to this question. I think that you are able to understand whatever I have given here. I think now you are able to hear it. Thank you, Banmali, because you have been telling me continuously about this problem of the battery and all this. So I think you are now able to hear everything there. Okay, if there is no any question from your side or any kind of thing, then I can stop the session here. All right. So thank you, everyone, and we will very soon come with a new topic here. Right, and my request is that whatever the PowerPoint is there, जो भी मैं PowerPoint use कर रहा हूँ, whatever PowerPoint I am using there, I am sharing in my Telegram channel. So please visit my Telegram channel. You can visit my Telegram channel. So in Telegram channel, whatever the PowerPoint is there, even this PowerPoint, I'll share the copy there, and then this action plan of the Cheetah project of the government of India file, PDF file, I'll put up just after the session there. So you can go to my Telegram channel, you'll find Neeraj Sir Science Tech Environment, है ना, वहाँ पे तो उसमें you can find the document there. ठीक है, then again I've been saying that please make sure that many people can join this channel and can get benefited from UPSC point of view and other competitive exams. Whatever important topics of science and technology and environment, डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट, आई विल बी कवरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. कई सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, साइंस रिपोर्टर, मेनी सोर्सेज आई विल बी कवरिंग इन द लाइव सेशन और रिकॉर्डेड वीडियो फ्रॉम टाइम टू टाइम. इवन आई गो फॉर शॉर्ट वीडियोज ऑल्सो देयर, रील्स विल ऑल्सो बी देयर. So I hope this is helpful to all of you, and please spread the word among your friends. Let more people join here and interact with me. Live session, you should always make a point to interact with me, right? That will make the session more fruitful. All right. So Abhishek has joined right now, right? Okay, my environment book he is asking there. My environment book is this one. We will find Environment and Ecology. A dynamic approach. This is the name of the book, and this is from the GKP publication, GKP Access Publishing House. That is my environment book is there. Abhishek is asking the question. That's what I've written the name of the book here. You can find there if you go to the website here. I'll just tell you where is that. अगर आप इसमें सर्च करेंगे
सिंपल आप नाम लिखेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये इंग्लिश, हिंदी और मराठी, ये तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप जीकेपी करेंगे, जीकेपी एक्सेस पब्लिशिंग, एंड यू राइट माय नेम, यू विल गेट दिस, है ना। अगर मेरा नाम लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये चीजें। थर्ड एडिशन बुक इज देयर, दिस द बुक, आई शेयर द, ठीक है। ये बुक है यहाँ पर, ये स्टॉक में ऑलरेडी है, ये 3 लैंग्वेजेस में है। यू विल फाइंड दिस इन 3 लैंग्वेजेस देयर, राइट। आप ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और डायरेक्ट पब्लिकेशन हाउस का। एट द सेम टाइम यू विल गो टू द बुक स्टॉल ऑल्सो, यू विल फाइंड दैट। एंड थर्ड एडिशन दैट इज अगेन इन द मार्केट हियर, राइट। ये हिंदी में भी है और मराठी लैंग्वेज में भी है, ऑल 3 लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, राइट। So I think Abhishek is clear here. You asked me the name of the book, so that's what I mentioned that. I hope this topic is really helpful to all of you, right? So we have discussed a number of areas there in this one. Let me just very quickly have a recap of what we have discussed. About the Cheetah Reintroduction Project, I have gone to the background. मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया, ठीक है, कहाँ कहाँ उसका रेंज था वो मैंने बताया। और रेंज के साथ साथ में मैंने ये भी बताया कि इसमें जो है मुगल के टाइम से, जहांगीर के टाइम से लेकर ब्रिटिश टाइम से लेकर तब तक चीता का रहा है यहाँ पर। देन कमिंग टू दिस अफ्रीकन चीता से एशियाई चीता, वहाँ से इंडियन चीता का हुआ है। देन ऑल्सो गिवन डिक्लाइन पॉपुलेशन का उस समय क्या रीजन था कि जहाँ पास्ट में कम हो गया। देन 3 लास्ट चीता आफ्टर इंडिपेंडेंस वर किल्ड बाय द इंडियन रूलर ऑफ कोरिया इन छत्तीसगढ़, वो चीज़ है। फिर चीता का फैक्ट बताया कि कहाँ संस्कृत पद चितकारा से आया, वो स्पॉटेड डाटा रेड डेटा बुक में वनरेबल है, 7000 नंबर से वर्ल्ड वाइड में। देन ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है ना। फिर यहाँ पर इसके स्पीड अप 113 किलोमीटर पर आवर। फिर प्रधानमंत्री के द्वारा 8 चीता को लाया गया, पहला नमीबिया से। फिर सेकंड बैच ऑफ चीता 10 आए, फिर धीरे धीरे उसको चीता को नंबर बैचेस से वो बढ़ाया जा रहा है। शुरुआत में 5 स्क्वायर किलोमीटर रखा गया, फिर उसको 740 स्क्वायर किलोमीटर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, तो वहां पर रखा गया। फिर धीरे धीरे इसको अभी डिसीजन हुआ है गोविंद सागर जो डैम है, गोविंद सागर एरिया एमपी, वहां पर भी अब उसका रिजर्व बनाया जाएगा चीता का, ठीक है। ओवर द टाइम नोरा देही और साथ साथ में राजस्थान का जो एरिया है मुकुंदरा हिल्स, वहां भी सेटल कराया जाएगा। 90 करोड़ का बजट है यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये मैंने डॉक्टर रोहन चक्रवर्ती और कार्टून के बारे में बात किया मैंने। देन आई डिस्कस्ड अबाउट मोर चीता बैच, देन कमिंग टू द पार्क एंड अबाउट देयर पार्ट। देन आई मेंशन सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, on what basis they can survive, cheetah there, adaptation, then vegetation, niche also. Why vegetation? Because it can maintain a herbivorous population, which is food of cheetah, है ना, food chain, food web के तौर पे। Then I discussed about deaths of cheetah, कि सासा, उदय, दक्ष, 3 cubs were born who died recently, और डेथ 8 चीता मर चुके हैं। तो उनका रीजन जो है वो मैंने बताया कि जहाँ पर पॉलिटिकल भी हो गया, इंजरी तो मैटर गया, एंड आई हैव गिवन द कॉजेज ऑफ द डेथ, the health reason, the medical reason there, and then I have come to the solution कि क्या क्या solution हो सकता है कि जिससे हम उसको कर सकते हैं। And finally I have come to the question that whether this project is successful, whether they will be able to survive in long term, तो उसका मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। So I thank all of you, and I'll very soon come with the new topic of environment and science and technology. Please subscribe to my Telegram channel, Neeraj Sir Science Tech Environment, and also whatever documents I will share there, and you can follow me in my Instagram and social media site also there, and then spread this word to people so that more people can come to this platform. Thank you everyone, take care.